Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to recommend you guys a book that you should read if you are interested in startups. This is one of the best startup books I've read and I want to talk in detail about this book today. इसके साथ ही मैं आपको एक लेक्चर सीरीज भी recommend करूँगा related to startups, but that will come towards the later half. Before I get into this week's recommendations, I quickly want to tell you guys about this amazing website that I discovered recently. इस website का नाम है Inspo. So Inspo is a website which is like the one-stop destination for inspiration. So basically you go to this website and type in a keyword. Let's say the keyword is tea. तो अगर मैंने वहाँ पे चाय को टाइप किया, so all the good things and all the inspiring things associated with this word will pop up on Inspo. Do bear in mind that it is a desktop web product, तो आप इसको अपने desktop पे use कीजिए and you will see all your creative energies flowing when you use Inspo. बहुत cool website, I love their interface also. You should definitely check them out. हमने link in description भी डाला है and do let me know how you like it. Now coming to the recommendations that I had for the week. So the book that I want to recommend for this episode is called The Hard Thing About Hard Things and it's written by Ben Horowitz. मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है startup related, मैं पढ़ता रहता हूँ. Like few years back I used to always read one book related to filmmaking and now I always try to read one book related to entrepreneurship also. और जब मैंने ये The Hard Thing About Hard Things पढ़ी, it was a very good experience because it is so real. मतलब it sometimes gets like okay, I need to like breathe and put it aside because it deals about like very uncomfortable things that no one tells you about. There is this chapter called The Struggle. तो बेसिकली बेन हॉरोविट्ज सेज कि यार मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डू दिस विदाउट लाइक फेंटिंग और थ्रोइंग अप टू मच. एंड इफ़ यू हैव सीन सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली में भी क्या होता है कि जो मेन सीईओ होते हैं लाइक ही कीप्स थ्रोइंग अप ऑल द टाइम बिकॉज लाइक इफ़ यू आर एंग्शियस, लाइक लेट्स से इफ यू आर इनिशियली अ कोडर बट देन यू हैव टू लाइक मैनेज लाइक 100 पीपल इन योर टीम. सो वो जो ट्रांजिशन होता है वो जो बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. तो when you read about that, like it really helps you and you understand so many people have gone through this. There's this one line that I really like in the book which says कि being scared doesn't mean being gutless. और बहुत सारी ऐसी situations आती हैं जहाँ पे हम feel कर सकते हैं कि that like we are feeling scared, but it doesn't mean that you do not have the guts. It's just that the mechanism you have to deal with a few situations is somewhat different. Another chapter that I like a lot is just win. कि यार अगर आपके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है कंपनी में या तो बेसिकली देयर कम्स दिस पार्ट वेयर यू कैन एक्चुअली क्रिब अबाउट इट, या जो आपकी मेंटल एनर्जी है जो लोगों को एक्सप्लेन करने में जाएगी यार मेरे नंबर्स इसलिए कम थे या ये मेरी कंपनी में ये चीज़ इतनी वर्क नहीं कर रही. सो ही सेज कि वो जो एनर्जी है ना जो आप लोगों को बताने में करोगे कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, उस एनर्जी को कंजर्व करके कोई एक चीज़ फिक्स कर लो अपनी कंपनी की. बिकॉज eventually everyone will be indifferent towards you, and this is something which Werner Herzog also says in the filmmaking journey कि most of the times when you'll make stuff you'll realize mostly people are indifferent towards what you do. And can you live with that? You will have to live with that because there will come a time when they could not afford to be indifferent towards you. They will have to care about what you are doing. तो बहुत टाइम तक का जो इंडिफरेंस होता है ना बहुत लोग झेल नहीं पाते. और ये फिल्म मेकिंग साइड भी होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप साइड भी होता है. एंड व्हेन यू हियर पीपल लाइक बेन हॉरोविट्ज और वर्नर हेrzog से कि ये तो पार्ट ऑफ द डील है गाइस, देख लो, मतलब यू विल हैव टू डील विद इट. आपका एज अ सीईओ या फाउंडर काम होता है यू जस्ट कीप द फ्लो मूविंग, लाइक जस्ट कीप द पेस गोइंग. और उसके अलावा जो भी चीज़ें वर्क नहीं करी, नोबडी केयर्स. कुछ भी हो जाए आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, नोबडी केयर्स. तो वो चैप्टर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सो दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस साइड, लाइक अगेन दी हार्ड थिंग्स. लाइक देयर इज दिस चैप्टर कॉल्ड डिमोटिंग अ लॉयल फ्रेंड. देयर इज दिस चैप्टर अबाउट कि चलो एक बोलते हैं ना कि यार कैन यू फायर पीपल, चलो फायर कर भी दिया बट लाइक did you fire it on the terms which like will make the life like okay for the other person? बिकॉज इफ़ यू इवन फायर समवन लाइक आप उनकी रिस्पेक्ट उनसे नहीं छीन सकते. सो वो चीज़ों पे जब इन्होंने टच डाउन अपॉन किया है, लाइक आई रियली लाइक्ड इट. जैसे कि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है कि आपके दिमाग में जो विजन है जब तक आप अपनी टीम को नहीं समझाओगे तो उनको नहीं आएगी ना बात समझ. तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा रियल किताब है. एंड स्टार्टअप वगैरह से रिलेटेड ना बहुत लोग ऐसा भी ज्ञान देते हैं जो मेरे को इतना रियल नहीं लगता, बट दिस इज़ वेरी रियल. एंड आई रियली वांट टू गिव अ शाउट आउट टू अनुषा हु इज़ द को फाउंडर ऑफ लेसन लीप.
मैं उनके साथ सेकंड लास्ट सपर पे जब पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने ये किताब रिकमेंड की थी, एंड द मोमेंट द पॉडकास्ट गॉट ओवर आई बॉट दिस बुक एंड आई रियली वांट टू थैंक her for recommending this book. I now want to move on to my second recommendation. It is actually a lecture series. इसके बारे में मैंने लूजली इधर उधर बात की होगी, बट लाइक अब था मेरे को इसको ढंग से इसका एक डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं. द लेक्चर सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ स्टैनफोर्ड का एक लेक्चर कोर्स है 20 लेक्चर्स का. इट इज़ कॉल्ड हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. पूरे कोर्स को क्यूरेट किया सैम ऑल्टमैन ने. सो दिस सीरीज हैज़ 20 lectures with people who are like every person is associated in the making of a $1 billion company. और हर जने का एक अलग लेक्चर है. जैसे ब्रायन चेस्की हैं जो एयरबीएनबी के सीईओ हैं, वो आके हायरिंग के बारे में बात करेंगे. अगर कोई फेसबुक के को फाउंडर आ रहे हैं तो मैनेजमेंट के बारे में आके बात करेंगे. लीगल के ऊपर एक लेक्चर है एंड ग्रोथ के ऊपर एक लेक्चर है. हर चीज़ के ऊपर एक लेक्चर है. मैं आज भी शॉक्ड हूँ कि ये सीरीज़ फ्री में कैसे पड़ी है यूट्यूब पे, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव टेकन अवे फ्रॉम द सीरीज. आई वुड हैव बीन विलिंग टू पे एनी अमाउंट दे वुड हैव आस्क्ड फॉर, क्योंकि अभी मैं सेकेंड टाइम देख रहा हूँ एंड आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स जो मैं फर्स्ट टाइम शायद मिस कर दी हूँ. पहले ही लेक्चर में सैम ऑल्टमैन आते हैं. ओके, नाउ वील टॉक अबाउट सैम ऑल्टमैन. सैम ऑल्टमैन इज लाइक दिस ओजी ऑफ लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स. ही इज़ लाइक द प्रेजिडेंट ऑफ वाई कॉम्बिनेटर एंड इनका एक ब्लॉग है, अगेन एडिशनल रिकमेंडेशन. सैम ऑल्टमैन का एक ब्लॉग है, प्रॉबेबली वन ऑफ माई फेवरेट ब्लॉग्स ऑफ ऑल टाइम, वे ही राइट्स अबाउट थिंग्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ. तो सैम ऑल्टमैन ने ही पूरी की पूरी सीरीज क्यूरेट किया. उनके 3 लेक्चर हैं इसमें, लेक्चर 1, 2 एंड 20 बीइंग द लास्ट वन. उसके अलावा हर में एक बहुत स्टड बंदा आता है एंड लाइक ही टॉक्स टू यू अबाउट करते कैसे ये चीज़. एंड द थिंग अबाउट लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट सैम ऑल्टमैन इज उनकी लाइन्स बड़ी कंक्लूसिव होती हैं कि एज अ फाउंडर यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, बट हर लाइन के पीछे मेरे को 6 महीने का होमवर्क दिखता है. वो बातों बातों में कुछ भी नहीं बोल जाते हैं. There is this another episode by Paul Graham in this series, again an OG when it comes to entrepreneurship. Paul Graham का Q&A देखना उसमें इतना अच्छा है, because when you will listen to these people you will realize कि ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बोल रहे, इनको सारी knowledge है इन चीज़ों की. And I would really suggest when you watch it for the first time, make notes, do it properly. And even if you don't want to run your own startup, podcast के जैसे देख लो. Think of this as a podcast of 20 episodes and it might change your life, because ये इतनी ज़्यादा highly effective series है. बहुत काम हुआ है इस पर और वो दिखता है. Once you watch it, there is this another, एक और recommendation दे देता हूँ मनोरा, क्योंकि सैम ऑल्टमैन की बात हो रही है. एक सैम ऑल्टमैन की एक वीडियो है यूट्यूब पे, हाउ टू सक्सीड एट अ स्टार्टअप. तो सक्सीड एट अ स्टार्टअप जब आप देखोगे, उसमें उन्होंने बताया कि चलो तुमने बना लिया, जब हो गया, अब इसको आगे कैसे लेके जाना है. स्टार्ट के बाद वाला जो फेज है उसके बारे में बात किया. अगेन ग्रेट स्टफ. सो आप देखो यार, बेन हॉरोविट्ज का भी एक्चुअली एक लेक्चर है इस पूरी की पूरी सीरीज में, जिनकी मैंने बुक रेकमेंड की है, उनका मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर है. तो येस, दिस इज हाउ ऑल्सो द डॉट्स कनेक्ट. तो वॉच दिस सीरीज, रीड द बुक हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स. Watch everything that Sam Altman has ever done or written. Mostly he writes, so everything that he has written in his life, and it will really help you. मेरा ये मानना है कि अगर आप लेक्चर्स को आप पॉडकास्ट के जैसे सुनना चालू कर देंगे यूट्यूब पे, लाइफ माइट चेंज. मैं तो आज घर पे ही जब आ रहा था तो मैं लेक्चर 1 वापस से सुन रहा था. नाइस. सो दीज वर लाइक माई स्टार्टिंग अप का स्टार्टर पैक जो मैं एक रिकमेंड करना चाहता था. Do check out these recommendations and let me know what you think of it. Also, do not forget to sign up on Inspo, a very cool website. अगर आप बिल्कुल एक अपना एक creative hub ढूंढ रहे हैं तो Inspo is the place to go, because it will help you in your creative projects also. Link in description में जाइए and sign up for it. And if you like our work, also become a patron. We have more than 110 patrons now. Thank you guys. आपकी वजह से like it helps us sustain the channel. Become a patron and get exclusive perks. You can read more about them in the description. And yes, I'll see you soon, guys. Take care.